Hello students, I welcome you all to my YouTube channel ePolitical Science. Today we will discuss an important discussion on the limitations and criticism of rule of law, and this will follow after I have discussed what is rule of law, okay, and then also the basic structure debate, which is also connected with the idea of rule of law, how rule of law is it emerged as a basic structure concept. So that also you need to understand. And then after we have analyzed the conceptual clarity of rule of law, AV Dicey's concept and other features of rule of law, we also need to know the criticism. What are the main loopholes, or we can say limitations? Okay, there are many limitations which I have tried to bring for you, but you can also write more if you want. Okay, so let us discuss on the वीकनेस कह सकते हैं, हम आलोचनाएं भी कह सकते हैं, सीमाएं भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं. बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ रूल ऑफ लॉ. So the first basic weakness which you can see on the screen is that the rule of law based on ordinary law is that the spirit of the rule of law is perverted when legislation results in unjust laws. Now ये जो particular line है ये मैं और अभी points में जब आऊँगी तो I will explain what do I mean by that rule of law is perverted when legislation results in unjust laws. कि अगर unjust laws बनते हैं, अगर legislation इस तरह से बनता है तो rule of law is not implemented since it is based on the ordinary law. Now in Britain, the principle of parliamentary sovereignty did not come into conflict with the rule of law. अगर हम ब्रिटेन का संविधान देखें तो ब्रिटेन और इंडिया का संविधान दो हमने काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें वहाँ से इनकॉर्पोरेट किया है, बट इन ब्रिटेन when we talk about the principle of parliamentary sovereignty, that does not conflict, that does not overlap with the rule of law. But in India, many times our legislation, our laws, they are made in such a way that most of the laws they are overlapping in nature also, that if one law talks about a particular principle, then the other law is trying to dilute that particular principle. तो ये जो एक ओवरलैपिंग देखी गई है इंडियन लॉ में, इंडियन जो हम लॉ और लीगल प्रोविजंस प्रावधान की बात करते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा एक कारण होता है कि रूल ऑफ लॉ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता कई बार. नाउ द थर्ड पॉइंट, इन इंडिया procedure established by law is followed. This is very very important, students. But when we see American Constitution, there is due process of law which is prevalent. Now if you can look into Article 21, it says that right to life and personal liberty except by if it would be accepted or it would be exempted if only if it is procedure established by law, except by procedure established by law. That means कि अगर कोई भी प्रोसीजरल लॉ आ जाता है, कोई भी लॉ जो कि पार्लियामेंट द्वारा पारित है और प्रोसेस का आधार है, देन वंस राइट्स, वन लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कैन बी टेकन अवे, योर फंडामेंटल राइट्स कैन बी टेकन अवे. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर जो भी हम वॉलेशन देखेंगे या आर्बिट्रेरी एक्शन देखेंगे स्टेट का, वो बहुत हद तक यहाँ पे जस्टिफाई किया जाएगा अगर प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय, अगर प्रोसेस सही है तो सब कुछ सही है. So that means कि in Indian Constitution we are not looking at the substantive part, but we are just looking at the procedural part. ठीक है, मैंने अपने लेक्चर में ये बताया था कि रूल ऑफ लॉ पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी है, वसुधा दागंबर, इफ़ यू वांट टू स्क्वायरिंग द सर्कल. उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया है कि हम रूल ऑफ लॉ के किस तरह के इंटरप्रिटेशंस को देख रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हाउ दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड व्हाट आर द फ्यूचर we can say suggestions that we can give for trying to enforce rule of law. If rule of law should prevail, then what should be done. अब जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वहाँ पे प्रोसेस नहीं देखा जाता, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिश बाय लॉ में ये बहुत बड़ा अंतर है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इट इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, इट इज़ मोर ब्रॉडर, और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट.
और इस नैरो कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या होता है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम न्याय को, इंडिया के जो कानून है उसको हम बोलते हैं कि कानून अंधा होता है, वन इज़ नॉट गेटिंग जस्टिस इन टाइम, डिलीवरी ऑफ जस्टिस इज़ वेरी लेट। सो ये सारे प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस इन्वॉल्व है, बट स्टिल इंडिया इज आवर लॉ इज ऑल्सो इवॉल्विंग एंड मेनी थिंग्स आर चेंजिंग, मेनी अमेंडमेंट्स आर बीइंग मेड एंड इन मेनी इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशंस वी आर नाउ फाइंडिंग द आइडिया ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और हमने राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी देखा गया था। उस तरह से सब्सिक्वेंट इंटरप्रिटेशंस में अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज़ ऑल्सो गेनिंग इट्स इम्पॉर्टेंस। बट हाँ, एक गैप ज़रूर है कि इंडिया में क्लियरली प्रोसेस है और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे चीज़ें जो है वो अलग तरीके से दी गई हैं, तो डिफरेंस आता है। देन अगेन इन इंडियन केसेस, इफ़ यू टॉक इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वी हैव पेंडेंसी ऑफ केसेस, देयर आर सो मैनी केसेस विच आर लाइंग there in court and no one is there to handle it. So then the next problem is corruption. We all know that there is corruption. So what type of corruption one is facing? Judicial corruption, political corruption, या किस तरह procedural corruption, जो भी corruption है उसकी आप बात करें, किस तरह का corruption है आप explain कर सकते हैं इस point को कि क्यों नहीं डिलीवरी होता है जस्टिस, और रूल ऑफ लॉ अंततः उसकी जीत क्यों नहीं हो पाती है, करप्शन का आधार क्या है, तो दैट इन डिटेल्स यू कैन राइट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑन द पार्ट ऑफ जजेस। Now when we find that many of the judicial interpretations they are coming, and in many cases which are very high profile cases, we find that the जो भी accused है they are let free and the victim is still suffering, they are still hoping for getting justice. So what type of justice we are expecting from our judges, from our system, from our institutions? So whether is rule of law, again we are questioning whether is rule of law. So if we try to understand that why rule of law is failing, because rule of law in itself is a very a normative concept which is all filled with idealism, which is all talking about substantive idea of things, but then why again it is lacking, it is falling, we need to understand. Then the seventh point is lack of corrective and time bound justice. ऐसे मैंने अभी आपको कहा कि हमें न्याय की ज़रूरत आज है और हमें 20 साल बाद मिल रहा है, तो वो जो समय सीमा इतना जो डिले हो जाता है, गैप हो जाता है, वो फिर हमारे जो क्वालिटेटिव जो लाइफ है उसको हमें नहीं फुलफिल कर सकता, एंड देन वी अगेन कंप्लेन दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन रूल ऑफ लॉ। एंड देन द लास्ट वन इज़ स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमिक फैक्टर्स इन द डिलीवरी ऑफ जस्टिस। जब हम संरचनात्मक कंस्ट्रेंट की बात करते हैं तो उसमें कास्ट, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी आ जाता है। कई बार कास्ट कैरेक्टर प्ले करता है रूल ऑफ लॉ डिलीवरी में, कई बार क्लास कैरेक्टर प्ले करता है, और बहुत सारे सिस्टमेटिक फैक्टर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं डिलीवरी ऑफ जस्टिस में। दैट ऑल्सो यू कैन पॉइंट इट आउट एंड देन यू कैन एक्सप्लेन that why rule of law is failing and why rule of law should not fail. That is also very important. In my first video रूल ऑफ लॉ को जब मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, उनके मीनिंग, उसके इंपॉर्टेंस, रेलिवेंस को आई हैव एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट. द रेलिवेंस पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. यू कैन विजिट देयर एंड यू कैन ऑल्सो लुक इन टू द बेसिक स्ट्रक्चर डिबेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ रूल ऑफ लॉ इज़ कनेक्टेड विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So that connection is very important. So if you find any problem in understanding, then you can let me know and then I will obviously guide you. Okay, thank you students, and please stay connected because this topic of rule of law and criminal justice system is a theoretical you can say a base. If you do not know this base, then you cannot write a good answer on your laws and your rights, because that base is very important to connect with the laws and the rights that is flowing through your syllabus. Thank you and have a nice day.